Hi, this is Hi, Zeeshan. Hi. Sujata. This is Sujata. अच्छा, where do you stay? I stay in Nerul. It's अच्छा, in, Nerul is good place, but हाँ. you know Nerul. Of Yeah, course, yeah. where You you stay I'm a here. Maharashtrian. I come there only on my holidays, on my vacations. Okay. So कितना टाइम हुआ दिल्ली में रह के? Delhi में I have been living since 2017. June I came here. Sorry, August I came here because that was the Jamia year, and 2 years of Jamia, actually 3. मतलब the last year was added because I missed my attendance in college. हाँ मैं वही सोच रही कि जामिया like masters. You did master there, right? हाँ, I did my masters. So 2019 में मेरा मास्टर्स खत्म हुआ और मेरा अटेंडेंस 2% से शॉर्ट हुआ, but I was placed in ABP. Oh wow! In Jamia, yeah, I was placed in ABP in Jamia only. So I worked in ABP for 6 months, and then in the 4th month, I told my boss Meenakshi Sharma that, "Ma'am, ऐसा problem है that I have to attend college for 6 months again." Okay. I had hidden this information from them, and even my college did not say anything because it was like a administrative thing because 2% से हुआ miss, and there was a new director which was there on the scene, so she wanted to make a statement by stopping me from not giving the exam. But later on, if you see, like in the COVID years, no one really cared for attendance, but still everyone got the. So it was like a statement making thing, but although it did not affect me, fortunately, because the ABP, my editor really liked my work because I used to do travel during that time. Oh. So COVID में travel. COVID में नहीं. This is 2019. Oh, okay. This is 2019 June to December I worked. तो ABC में okay work like internship नहीं था वो ABC में? Full time. It was like a मतलब good package. तो exactly starting में इतना अच्छा package मिलता है? I mean I have no idea कि कितना package. नहीं मिलता. Starting में you usually get the average. I'll tell you. Yeah. The average you get is आजकल तो थोड़ा बढ़ गया है तो मतलब if you have good ठीक ठाक skill set तो 30 तक की एवरेज माना जाता है, बट वी वर लकी टू गेट लाइक 45. Wow, you're kidding me. इतना स्टार्टिंग है तो मुझे लगता था कि बेसिक अभी नहीं है इतना बिकॉज आफ्टर कोविड द थिंग्स हैव चेंज्ड आई फील. तो एबीपी में रोल क्या था? सॉरी आई वाज सो हमारे टाइम पे दे हायर्ड 10 people फ्रॉम जामिया. Okay. ABP में, and I was Uhini, my friend, and me. We both were the only people in digital. Okay. Rest, all of them were hired for TV. So I did not know initially what the role was. But then in June 2019 when I joined ABP, तो उस time मुझे बोला गया कि I'll work for a thing called ABP Uncut. Okay. So ABP Uncut बस 1-2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था. So we were kind of the founding team of Uncut. Okay. Do you follow Uncut? Okay, no, Uncut मैंने सुना है. हाँ, ABP का है. अभी तो Instagram पे उसके 50,000 फॉलोअर्स हो गए. हमने तो स्टार्ट किया था, इट वाज वेरी स्मॉल, इट वाज जस्ट बिगिनिंग. तो 2-3 साल में उसको बहुत मतलब बढ़ गया वो. तो मैंने अनकट में काम किया मैंने. एंड अनकट वाज बेसिकली डिजाइन्ड फॉर समथिंग मतलब which ABP wanted to invest in original content. Uncut was supposed to be original content. So their plan was initially to make it like an OTT. Okay. So that was the brief given to us, and we followed it. And me and Uhini, we produced like 5 to 6 travel shows. Like really good travel shows in the sense के थोड़ा अलग, you know, जैसे कोंकण. अब तो तुम मुंबई में रहती हो तो you know what कोंकण is. Yes. So कोंकण is my birthplace also. तो वहाँ पर मैंने एक 5 एपिसोड का सीरीज किया था इनिशियली. So we used to just go to one place and then explore it from not like a tourist point of view, but from a culture point of view. Okay. You know? Yeah. So a lot of new things we got. जैसे हम अलीबाग में गए थे तो we went there thinking of something, but then we discovered this the last surviving Israeli community living on the coast of India. Bene Israelis. Okay, so like basically तुम लोगों ने cover किया था. This is one example. जैसे हाँ तो ऐसे 5 एपिसोड का सीरीज. So this was like the beginning in ABP. And then तो 6 महीना मैंने काम किया. Travel, फूड शोज, ये वो बहुत नॉन न्यूज था मैं उस टाइम. बट ऑब्वियसली माई टिल्ट वाज ऑलवेज इन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, ये वो. तो बस उसके बाद 1-6 महीने का ब्रेक लिया कॉलेज के लिए. कॉलेज किया, आई केम बैक
So when I came back, it was COVID. And the things are really different. Travel has stopped. So जो plans थे पूरे, Samsung had agreed to sponsor the show. It was called Ghoom Lens. But then COVID happened and it just fell flat. So वो जब खत्म हो गया ना, तो the editor did not have any plans for me. So I was kind of struggling there for like 6 months. Because I was away for 6 months. So the first, not 6 months, I was struggling for a couple of months, 3 months I was struggling perhaps. But then I got my footing because I understood what the news game is, you know. I knew documentary filmmaking. ठीक था. I could view a story. मतलब video मैं कर सकता था. But I did not know the game कि क्या views के लिए, you know, what these people actually want from the people working. Exactly. So I started working, and my things started getting views also, and Ankar also started becoming big. We were initially a team of like 10 people only. और अब भी इतनी ज़्यादा नहीं है. अभी 20 एक लोग ही है. But still, so when we were working, it was like we were very tight. मतलब हम लोग को सब कुछ ही करना होता था. But that was a good thing. So the things changed when I did farmers protest. Sorry, farmer protest, okay. Farmers protest, yeah. When I covered farmers protest properly, जैसे होना चाहिए, not गोदी मीडिया के जैसे. And हमें कोई brief था भी नहीं. Meenakshi was never like, मतलब she is not at all, you know, the kind. Okay. क्या बोल सकता हूँ, you know, right wing or whatever you want to call it. She's not like that. She's very neutral. So she never asked me to do anything कि ऐसा करो. So I did my, जैसे मुझे सही लगा उस हिसाब से on ground. And I did one story which like why are farmers, मतलब हिंदी में ही थी कि किसान क्यों मीडिया को गोदी मीडिया कहते. तो ये मेरा टाइटल था. It became like a problematic thing inside office. And I was asked to not do videos. So they gave me a very silly reason, and I was moved to the text team website में. सिर्फ वो एक reason के वजह से then change department? No, not एक reason, but मतलब you know, I do not necessarily align with the politics of ABP. ठीक है? Okay. And whatever. क्या है ABP की politics? जो भी है, अब तुम देखते ही हो. मतलब things are extremely tight in media, in the sense कि you will be watched. The management is extremely, I don't want to call it like independently you can't work. I mean neutral, okay. बिल्कुल नहीं. तो you have to pick a choice. Side. हाँ, साइड नहीं लेनी तुम्हें किसी की, बट तुम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. ओके. और आपको, अगर आप, मतलब मेरा मानना तो यही है, बाकी जर्नलिस्टों का और हो सकता है. आई फील कि इफ इट्स नॉट क्रिटिकल, इट्स नॉट जर्नलिज्म ओनली. व्हाट, अगर आपको स्टेनोग्राफी करनी है फिर आप करो, ठीक है. बट मतलब ठीक है, यू हैव टू बी क्रिटिकल, नो. एनीवे, मतलब so that happened, and उसके बाद अभी you are in like the wire. उसके बाद मैं अपना एक इंडिपेंडेंटली चैनल भी चलाता हूँ. which is called the Archive. हाँ, मैंने वो देखा था. तो that was also a problem for ABP. तो मैं वेबसाइट में काम करता था, ABP इंग्लिश वेबसाइट के लिए. Okay. तो see, like if you are working for an organization like media or ABP, तो साइड बाय साइड तुम इंडिपेंडेंटली खुद का कुछ नहीं कर सकते? नो, यू कांट मोनेटाइज. यू कैन डू जैसे लिख कर सकते हो, बट ऑफिशियली नहीं कर सकते. यू नो, इफ यू रोब इन योर एडिटर और एडिटर से बात करो तो कोई दिक्कत नहीं होती. जैसे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी ऐसे, लेकिन मैनेजमेंट को इवेंचुअली दिक्कत हुई क्योंकि उस चैनल पे जो कंटेंट जा रहा है ना, वो उनको सही नहीं लगा. Oh, okay. They felt it's anti-government or whatever they felt. Oh, okay. I mean, in my opinion, ये एक issue है. Yeah, everyone is scared in the media. मतलब no one is. Please don't expect a lot of good things from if you want to work. Okay. Don't expect कि मतलब बहुत चीजें फॉलो नहीं की जाती जो मतलब बेसिक टेनेट्स है जर्नलिज्म के. जैसे कोई भी सिंपल सी बात, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कोई अगर वीडियो जानी है तो उसको 2 लेवल पे चेक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा. ये तो बेसिक है. ये तो कोई कॉलेज में भी वीडियो बनाए तो
एक आदमी चेक करता है उसको। यहाँ पर आप ऑन एयर डाल रहे हो तो 2 लोग भी उसको चेक नहीं कर रहे एट दिस मोमेंट, एक आदमी कर रहा है प्रोबेबली। ठीक है, तो मतलब दिस इज वेरी सैड स्टेट ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कि मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है, बट वायर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिटी ऑफ वर्क है। वायर आई थिंक काफी उसकी भी आइडियोलॉजी है, मुझे ऐसा लगता है। ट्रू डेफिनेटली, व्हाई नॉट आइडियोलॉजी। आई थिंक आइडियोलॉजी होना इम्पोर्टेंट है या फिर नो नॉट नेसेसरीली। देखो आइडियोलॉजी वगैरह मैं अब I'm sure you are also reading a lot of things and you will also get to know. Yeah. But I don't feel this age, even though people want to press it on ideology, इतना लोग ideology को इतना importance दे रहे हैं। कांग्रेस ideology भी अब की बात कर रही है, RSS बीजेपी तो कर ही रहे हैं। I mean to be honest, मैं तो नहीं देती। I mean मेरे को तो न्यूट्रल रहना है, बट हाँ ठीक है, लोग ऐसे साइड पिक कर लेते हैं। देखो न्यूट्रल रहना भी इम्पॉसिबल है, मुझे तो न्यूट्रल है, बट जैसे आइडियोलॉजिकल वो खत्म हो गया। आई फील द बैटल इज ओवर बिकॉज द आइडियोलॉजीज हैवंट वर्कड। पूरा 20th century वाज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। लेफ्ट कम्युनिज्म डिड नॉट वर्क। नाउ इज जस्ट क्या बोलूं, सहूलियत है। अब सहूलियत वाली आइडियोलॉजी है। हाँ, जिसको जैसा ठीक लगता है। एग्जैक्टली, आज कोई यहाँ तो कल कोई वहाँ। Okay, makes sense. But हाँ ठीक है, the wire में आपको exactly क्या रोल है? But I'll just suggest you this before you मतलब obviously you'll work whenever you'll work. Yeah. So never ever show whatever your opinions are, मतलब ठीक है? क्योंकि मतलब people will judge you, क्योंकि you are a young person and you would जैसे तुम्हें इंडिया टुडे में भी काम करना है, वायर में भी काम करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ ऐसे अपनी इमेज बना लो कि तुम कल को इंडिया टुडे में काम ना कर सको, या तुम ऐसी इमेज बना लो राइट विंग की तुम वायर में काम ना कर सको। लाइक रवीश कुमार एज अ जर्नलिस्ट, नो रवीश कुमार भी नहीं, जैसे एज अ जर्नलिस्ट यू शुड बी फ्लेक्सिबल के कल को जैसे इंडिया टुडे है थोड़ा सा प्रो गवर्नमेंट है, लेकिन इट्स फाइन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इवन ABP इज फाइन, ओके। तो जैसे अगर प्रो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमें एज पीपल सर्वाइव तो करना है, नौकरी तो करनी है ना। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर आपको उस तो मतलब यू बिलीव इन वॉट एवर यू बिलीव, योर आइडियोलॉजी, वॉट एवर योर आइडियाज आर, यू बिलीव इन दैट, बट don't portray yourself as somebody leaning to this side or that side. Okay. हाँ, मतलब you can, of course you can be honest with everything, but जैसे कि कल को जैसे ना, for example I'll tell you, थोड़ा longish example है, but अभी the reason I left ABP was मतलब I did not, actually I was asked to leave. I was not sacked. Okay. I was not fired, but I was asked to leave. Okay. So they gave me 4 months extra salary, so which is a confidential information I'm telling you. Wait, because like वो protest का जो भी आपने जहांगीरपुरी में शूट करने गया था। मैं अपने खुद के Instagram पेज के लिए। Okay. उसके लिए एक स्टोरी करने में अपने इंडिपेंडेंट छुट्टी के दिन पे गया था, which was not a problem, which is not a concern of this organization still, and so वहाँ पे कुछ altercation हुआ and these people did not help me. Okay. Altercation with some media persons. Oh, okay. मतलब they घेरावed me and because they were trying to push an agenda and I was just there with a camera person, with a friend of mine. Yeah. तो उन्होंने मुझे घेर लिया, बोल दिया कि I am doing something mischievous. तो पुलिस ने लिया मुझे, पुलिस asked me some questions, they realized within a minute कि there's no तथ्य in the story. Okay. So they said कि just show me your ABP का ID card and leave. Okay. So ABP का ID card did not carry, so my friend had to get it from Jamia, which is like 2 hours from Jahangirpuri. So he got it, but meanwhile I called my ABP people and they did not help me, rather they made a big issue out of it, and I was asked, and they got the reason, they wanted to get me out of the organization because of my ideas, you know. See there are problems, जैसे मैं तुम्हें इतना बता रहा था कि ideas वो मत करो, but anyway, so this thing ना, this thing I did, there was a time when I was feeling कि should I go to organizations, because I know people in News Laundry, they were very excited to have me on their show. News Laundry people with this story, but I said कि रहने दो, मैंने बोला छोड़ो,
क्योंकि अगर मैं वो करता तो फिर ना मेरा एक वो बन जाता, सी इफ यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क, जैसे श्याम मीरा सिंह को जानती हो तुम? श्याम मीरा सिंह? ओके, सॉरी, नो, आई डोंट नो। हाँ, तो ही अच्छा है, नहीं जानते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सो ही इज क्वाइट फेमस बिकॉज उसके साथ भी सेम हुआ, इंडिया टुडे के साथ हुआ, ओके, एंड ही पुट इट ऑल ओवर social media and he became very famous out of that. Okay. So agar if you are willing to take that risk, if you want to do that what Shamira Singh is doing, then you can do it. But if you want to honestly work as a journalist and इंडिया टुडे में भी रह के अच्छा काम किया जा सकता है ना, एबीपी में भी रह के अच्छा काम किया जा सकता है, मतलब संघी लोगों के साथ भी रह के अच्छा काम किया जा सकता है. तो अगर वो तुम्हें वो चांस नहीं खोना ना, तो जस्ट डोंट out and out be like this or that side. Although I'm sure you would have certain things that you cannot, जैसे तुम कुछ चीजों में बिलीव करोगी, जैसे मैं भी 1000 चीजों में बिलीव करता हूँ, इसी वजह से मेरे इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए एबीपी में. आई थिंक एक बार काम करने के बाद, ग्राउंड पे उतरने के बाद समझ में आएगा कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. कॉलेज में बैठ के सब ठीक ही लगता है, दूर से देख के. अभी तो ग्रेजुएशन बीएमएम नो, एंड बीएमएम यू हैव चूजन जर्नलिज्म, नॉट एड. नो, ठीक है. अच्छा है. तुम्हें करना चाहिए था क्या मुझे ऐड? नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐड मुझे बहुत बोरिंग लगता है. तुम्हें अच्छा क्या लगता है? Journalism. Great. See, for me, it was always like, see, I am also I'm 25 only. So it is always, मतलब अभी कुछ सालों पहले की बात लगती है कि it was more about people stories. Yeah, me too. Exactly. मुझे भी यही लगता है. And इसलिए मेरे को ये करना है. You know, the tipping point of my life was once documentary which we had to do in the last year. Exactly, तुम तो अभी 5th semester में ना? Or you're in 6th semester? 6th semester. Oh, you're in 6th semester. Yeah. Right. So मैं भी 6th semester में था. We have had to do a documentary for I think वो subject का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा. I'm sorry. Okay. So I'm sure you would be having that subject. Okay. And तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं था, कुछ नहीं था. Because you know how great the PMM course is. We know. बहुत अच्छे से. तो कुछ पता नहीं हमें कैसे बनती है फिल्म, कैसे क्या होता है, वो तो हमें फिगर आउट करना है खुद ही, थोड़ी चीजें इधर उधर से सीख के. एंड ग्लैडली द स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर बीएमएम आर रियली गुड. एंड मतलब फॉर मी इट वाज लाइक दैट कि आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय फ्रेंड्स, कॉलीग्स. तो उनसे बहुत सीखा है मैंने, सच में बोलूं तो. और टीचर 2-3 अच्छे मिले. बीएमएम कर रहे थे उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे बोल रहा हूँ. आपने जेवीएस से किया था ना बीएमएम? ना, रुइया. Oh yeah, sorry, I forgot. Okay, and then उसके बाद जामिया का आपने एंट्रेंस क्लियर किया? जामिया का मैंने एंट्रेंस का तैयारी तो मैंने, it was quite an exam. It is quite an exam to crack. मतलब it is not so easy. And you are, I think, you are quite on the right path.